टू द क्लास, थप्पड़ मिलेगा। क्लास पे आ जाओ, बोलने के बाद बहुत खुश रहेगा। सुप्रभातम देबू माल्या, नमस्ते। अरे मेस्सी गारू, एक बार मैसेज करना ग्रुप में, आज इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स करेगा, क्लास में आ जाओ, बोलो। ग्रुप में मैसेज करो। मेस्सी अंकल, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑल ग्रुप्स में। आपका जेड का ग्रुप में नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ अनअकैडमी प्लस ग्रुप्स में डालो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? संडे कैसा हो गया? हाउ इज योर संडे? चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 8। वेरी गुड। टेस्ट मार्क्स अच्छा आ गया बुरा आ गया छोड़ दो, गिविंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बोल रहे ना, मार्क्स अच्छा आ गया बुरा आ गया छोड़ दो, ये छोड़ दो, गिविंग टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये मालूम था मेस्सी गारू, हमको मालूम था। चलो, अरे ये डिप्रिसिएशन है चैप्टर, डिस्पर्शन नहीं। शिंदे गारू, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम क्या बोल रहे हैं? डिप्रिसिएशन। ये डिस्पर्शन नहीं बेटा। टेस्ट अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, इवन रैंकर्स आल्सो गिवन गुड फीडबैक। अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज अच्छा है बोल दिया। हाँ, क्योंकि देवू मालिया, आप WBPSC एग्जाम लिख दिया ना, सैटरडे एग्जाम लिख दिया ना, पक्का संडे डिस्पर्शन में चलेगा। इतना खराब एग्जाम है, सीन द पेपर मिल गया मेरे को। अरे इतना खराब एग्जाम कौन दे रहे बेटा? पहले ये पूरा खत्म करो ना रेवंत, पहले अनअकैडमी लाइट फुल टू फुल ऑल टेस्ट खत्म करो। खत्म करने के बाद मैसेज करो, आई विल टेल यू व्हाट टू गो वेयर टू गो, हाउ टू नेक्स्ट। पहले पूरा का पूरा। दे डोंट वांट मोर इंजीनियर्स टू राइट गवर्नमेंट एग्जाम, दैट इज व्हाई पेपर ऐसा आ गया। किससे बात करेगा? जज से बात करेगा, केपी सर से बात करेगा? मेस्सी लीव इट क्या है बेटा, आ जाओ। शिंदे अंकल ठीक है डन। शिंदे अंकल कनेक्टिंग बोल रहे हैं मेस्सी, बट नॉट कनेक्टिंग। बताओ मेस्सी गारू, आवाज नहीं आ रहा है? नो, आवाज नहीं आ रहा है। माइक नहीं है आपका फोन पे? फोन पे माइक है क्या, है या नहीं? अरे चेक करो बेटा, नहीं होगा जज का फोन से आ जाओ। चलो चलो, क्या हो गया मेस्सी अंकल? सो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या हो गया? हाँ, टुडे लास्ट क्लास ऑफ CPM सात्विक। गुड मॉर्निंग अभिषेक। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने के बाद हम एक वैल्यू के बारे में बात करेंगे, डिप्रिसिएशन। सो ये डिप्रिसिएशन क्या है? यू परचेज्ड योर लैपटॉप टुडे, ओके? सो यू स्टार्टेड यूजिंग, 50,000 से लैपटॉप लेके आ गया, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो गया, 3 साल खत्म। यू वांट टू सेल ऑफ द लैपटॉप, कैन यू गेट द सेम 50,000? सो इट विल बिकम सेकंड हैंड, यू कैन गेट 25,000 रुपीज 3 साल के बाद। 3 साल के बाद 25,000 रुपीज आ रहे। डिप्रिसिएशन क्या है? 25 के डिप्रिसिएशन ओनली ना। अरे यू परचेज्ड वन प्रोडक्ट, एक लैपटॉप, 3 इयर्स यूज किया, यू वांट टू सेल इट ऑफ, सो अगेन सेल प्राइस क्या है? 25,000। डिप्रिसिएशन क्या हो गया? 25,000 इज लॉस ना। दिस इज द सेल प्राइस। सो मेस्सी गारू सोच लिया, अरे 25,000 में और 25,000 लॉस हो गया, 25,000 लॉस हो गया, सो आई डोंट वांट टू सेल, आई डोंट वांट टू गिव इट, छोड़ दो। अगेन ही यूज्ड 2 more years, देन इट कम डाउन टू 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स ही सेल इट। इनको इतना अच्छा पैसा मिल गया, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल गया, 11 आ गया, मेस्सी अंकल को 1 लाख दिया गवर्नमेंट वाला नया लैपटॉप बनने के लिए, सो दैट ही सोल्ड आउट, सोल्ड प्राइस 50,000 to 20,000, 30k is a loss, 30k is a loss. So how many years he used? He used 5 years. So 30,000 and used for 5 years. So what is every year depreciation? This is called depreciation per year. Total depreciation is 30k. Depreciation per year is 6,000. This is simple. There are so many methods to derive it. This is the best and basic common man method. Engineering method क्या है? साइंटिस्ट क्या प्रपोज कर दिया, हम बात करेगा। This is the basic common man का अप्रोच है। ये डिप्रिसिएशन हर एक साल 6,000 को डिप्रिशिएट हो गया, 5 साल में 30,000 डिप्रिशिएट हो गया, सो फाइनली एवरी ईयर 6,000 पर ईयर हो गया। ये बोल रहे डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन 30,000, एनुअल डिप्रिसिएशन 6,000। सो व्हाट वी कॉल इट एज, यस, डिक्रीज और डिक्लाइन ऑफ एसेट वैल्यू, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होने के बाद एसेट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। आप आज नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, बहुत अच्छे घर बना दिया, 50 लाख से आपका जमीन में 50 लाख से बहुत अच्छे घर बना दिया, आफ्टर 20 इयर्स कैन यू सोल्ड द हाउस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, हम लैंड वैल्यू की नहीं बात कर रहे। घर बनने का वैल्यू 50 लाख,
सिर्फ 50 लाख हो जाएगा। गुड मॉर्निंग हुमायूं, कैसे है? ये समझ आ रहा है आपको? हम लैंड वैल्यू के बारे में नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ घर बनने का 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, आप सिर्फ घर को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, देन 50 लाख मिलेगा आपको। So maybe 25 lakhs, maybe 20 lakhs, maybe 15 lakhs, depending upon the age of the construction. Depending upon the age of the construction. So that the decrease of asset value, decline of asset value with respect to age, time, that is called depreciation. So ये depreciation estimation costing का chapter नहीं, वही college में ये दे रहे ऐसा, देवू माल्या गारू, it's not under estimation costing, it is under project management, engineering economics में आ रहे। चलो, एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, हाँ, definition के बाद लिखो, I will tell you. First write down. Decrease or decline of an asset. Asset क्या है? Property बोल रहे, property. भाई टीम हम एस्टिमेशन कास्टिंग में पढ़ाते हैं इसलिए पूछा। कोई प्रॉब्लम है आपको? फुकेट में फ्री में मिल गया ना? फुकेट में फ्री में मिल गया ना? एंजॉय करो बेटा। डिक्रीज और डिक्लाइन ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी वैल्यू ड्यू टू एज। एज मींस increase of time is called as depreciation. देवू माल्या को WBPSC में जॉब मिल गया। नाउ देवू माल्या सरकारी नौकरी मिल गया ना? सरकारी नौकरी मिलने के बाद शादी को डिस्कशंस हो रहे। देवू माल्या का डाउरी पूछ लिया 1 करोड़ पूछ लिया देवू माल्या। सो इनका एज 25 है, गवर्नमेंट जॉब है इनका पास, सो इज डिमांडिंग 1 करोड़। देन कोई आदमी नहीं आ रहे, देन आफ्टर 2 years ये बोलिए कोई आदमी नहीं आ रहा है, 1 करोड़ बोलने के बाद थोड़ा कम करेंगे, 80 लाख बोलेगा। ऐसा बार्गेन करके वो भी नहीं आ रहे हैं, देन 30 years हो गया, 30 एज आ गया इनको, 25 to 30 एज मींस 5 years हो गया, देन 1 करोड़ से 50 लाख के कम हो गया, 1 करोड़ से 50 लाख के हो गया। एज इंक्रीज हो रहा है ना, देवू माल्या का डिमांड कम हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, एज देवू माल्या का इंक्रीज ज्यादा हो गया, सो डिमांड कम हो रहा है, 50 लाख, 1 करोड़ टू 50 लाख। देन 50 लाख डिमांड करने के बाद कुछ भी नहीं हो गया, देन फाइनली 35 या 36 years हो गया देवू माल्या का एज। फाइनली क्या बोल रहे हैं? अरे बाबा डाउरी मत चाहिए, सिर्फ लड़की मिल गया तो बस हो जाएगा, लड़का नहीं चाहिए, लड़की मिल गया तो बस हो जाएगा, हम सिर्फ शादी करेगा। सो सेम लाइक दैट विद इंक्रीज ऑफ एज डिमांड कम हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ एज ज्यादा होने के बाद डिमांड कम हो जाएगा। सो दैट डिमांड कम होने के कारण से कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वी विल टेक इन फ्यूचर, अनंत विल प्लान इन फ्यूचर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। Decline of cost before SSC JEE, that will be done in SSC JEE subscription, not here. That content will be done in SSC JEE subscription, not here, Anand. That is the problem. ESC को टाइम लगेगा। नो अभी तक नहीं ले लिया, कहा भी नहीं ले लिया अभी तक। हाँ नोट्स मिल जाएगा, पक्का नोट्स पूछ के दिएगा आपको, डोंट वरी। सो फिजिकल कंडीशंस, अरे दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, ये इतना ज्यादा बार बात किया, फर्दर टू ओनली 3-4 मीटिंग हो गया मेसी गाल, दे सेड दैट इज SSC JEE, दिस इज गेट एंड ESC, कैसा दिएगा? सो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो व्हाई फिजिकल कंडीशन से डिक्लाइन ऑफ एज? वेयर एंड टेयर, corrosion losses, at least no Anant, at least plus में before SSC JEE we'll do at least some 10 session 20 hour course, I will try for it। नहीं होगा लास्ट में करेंगे, ये प्लान करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, डन before SSC JEE। I will try to launch it plus under the ESC category, नहीं पॉसिबल होगा तो then we will plan it। so wear and tear, corrosion losses, lack of maintenance, wear and tear, corrosion losses, lack of maintenance, abnormal working conditions, these are the physical conditions। so देवू माल्या गारू को सरकारी नौकरी मिल गया, so he won't go to gym, पेट बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा खाएगा, अपीयरेंस बुरा हो गया, so डाउरी कम हो जाएगा। lack of maintenance, आप 50 लाख से अच्छे घर बना दिया, घर बनने के बाद आप नहीं है घर में, you gave it for rent, रेंट वाला कुछ मेंटेन करेगा? सिर्फ इनका काम ये ले लेंगे, घर का मेंटेनेंस के बारे में कुछ सोचेगा? कुछ भी नहीं सोचेगा। सो द 50 लाख का घर क्या हो गया? 50 लाख का घर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ यस लेना, डिमांड कम हो जाएगा, यस लेना, आप मोटू बनने वाला पक्का। हर एक सरकारी नौकरी का करने वाले को देखो एक बार, सरकारी इंजीनियर को देखो, दैट इज ट्रू ओनली बेटा। क्या सोच रहे सरकारी नौकरी मिलने के बाद? आप भगवान जैसा सोचेगा, यू फील लाइक भगवान, अरे हम गवर्नमेंट जॉब मिल गया, इतना फोड़ देंगे रे बाबू। चलो, डिक्लाइन ऑफ कास्ट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, कंस्ट्रक्शन लॉसेस, लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड एब्नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, दिस आर ऑल कॉल्ड फिजिकल कंडीशन। अरे बाबा, देन फंक्शनल क्या है? फंक्शनल कंडीशन क्या है? obsolescence, what is meaning of obsolescence? age effect is obsolescence। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बना गया, एज आउट ऑफ डेट हो गया, एज इंक्रीज होने के बाद आउट ऑफ डेट हो जाएगा, प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल नोकिया, कोई आदमी नोकिया फोन अभी यूज कर रहा है क्या?
कोई आदमी नोकिया फोन अभी यूज कर रहा है क्या? So because it is not improved with respect to technology, it has not improved its products like with respect to technology, so that एज एफेक्ट से इनको डिमांड कम हो गया. आपको आर्क्यूट मालूम था? आर्क्यूट कभी सुना वर्ड? अरे 2005-6 में ये बहुत फेमस था आर्क्यूट. फेसबुक फेमस नहीं, ट्विटर फेमस नहीं. नो नो, इट इज लाइक ए सोशल मीडिया. हाँ, सोशल मीडिया आर्क्यूट 2005 में इतना इतना डिमांडेड है. अभी क्या हो गया? इट इज अनेबल टू. हाँ, टोरेंट आल्सो सेम टोरेंट्स आल्सो. इट इज अनेबल टू कम्पीट विद फेसबुक एंड ट्विटर. चल जाएगा. सो कंपटीशन में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट होना चाहिए. नहीं होगा, चल जाएगा. सेम लाइक वी कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग. ए बिल्डिंग पुराना वाला मॉडल होगा तो इनका डिमांड कम हो जाएगा. If it is a new model, as per modern world, it should be increasing. It should be increasing. But if it is a old model, traditional houses, कम हो जाएगा. हाँ, वो भी बोल रहे हैं. So that is called obsolescence. Obsolescence क्या है? एज इफेक्ट. एज इफेक्ट. inadequacy. inadequacy. insufficient capacity. inadequacy का बोल रहे हैं हम. insufficient capacity. ये बात सुनो. 2010, 2012, 2013, 14 में अपार्टमेंट होगा तो सिर्फ सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा. सिंगल बेडरूम 1 BHK मिलेगा अपार्टमेंट बोलने के बाद. क्योंकि वो टाइम पे इंडिपेंडेंट हाउसेस आर वेरी फेमस. पीपल आर वेरी लेस, सो दे आर टेकिंग ओनली 1 BHK. हाँ, ये भी मिल रहा है. नाउअडेज कोई आदमी नहीं ले रहा है 1 BHK. 1 BHK नहीं ले रहा है कोई आदमी. 3 BHK ले रहा है, 2 BHK ले रहा है. इवन सम पीपल गोइंग टू 4 BHK. अरे मुंबई में हाफ BHK चल रहा है अभी. देखो मालिया, मुंबई में अभी हाफ BHK चल रहा है. हाफ BHK, नॉट 1 BHK. हाँ, दैट इज हाफ BHK, 1 रूम किचन, दैट्स इट. हाँ, रियली अभिषेक, इतना कॉस्टली ना. सो आपको मुंबई में हाफ BHK कास्ट में हैदराबाद में 3 BHK मिल जाएगा. मुंबई हाफ BHK कास्ट में आपको हैदराबाद में 3 BHK मिल जाएगा. हाफ BHK रेंट 30,000, हैदराबाद में 3 BHK रेंट 30,000. So that is the cost. इतना कॉस्टली था मुंबई. चलो, so that inadequacy, insufficient capacity, these are the reasons for depreciation. This is the reason for depreciation. चलो, then methods to find out depreciation. Methods to determine. Methods to estimate. Already we said 1 minute. You can write this. You can write this example. This is simple example. आसान वाला समझ आएगा आपको. So annual depreciation लिखो. Annual depreciation. And this is purchase cost. Purchase cost. ये लिखो, example लिखो. Pune also very expensive because Pune is a twin brother of Mumbai. That is why Pune become twin brother of Mumbai. That is the reason. So I have a dream. Before Pune will become that much costly, I can buy at least a flat in Pune, like a holiday house. I have to make it actually. हाँ, ऐसा भी सोच रहे सात्विक गारू. Done, completed guys. Nice Shinde uncle. चलो. So methods to estimate. There are 4 methods to estimate. Sinking fund factor method. 2022 गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया. फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम गेट में एक टॉपिक से एक बार आ गया. पहले बार डिप्रिसिएशन से, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम 2022 में आ गया सिंकिंग फंड फैक्टर मेथड. सिंकिंग फंड फैक्टर मेथड. स्ट्राइट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. स्ट्राइट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. स्ट्राइट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन. सॉरी, सम ऑफ ईयर digit method. Sum of year digit method. Soil. Then declining balance method. Declining balance method. And this declining balance, single, double, single and double. So all the 4 methods we have to do. It is very easy. I can explain it in a simple straightaway manner. Because one question पक्का SSC JEE में ये मेथड से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा. Besides gate means ये सेशन आपको गेट में यूज हो जाएगा, ESC में हो जाएगा, SSC JEE में भी हो जाएगा. This chapter very important for you. So 1 question is the minimum for SSC JEE because SSC JEE मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आएगा. प्रीलिम्स में थोड़ा एक क्वेश्चन आएगा, बट मेंस में 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे मेथड से. चलो, so before starting about the different methods, we'll talk annual depreciation. Annual depreciation. What is annual depreciation? The amount which is lost or which is kept aside as a savings
every year against depreciation. The amount which is lost or which is kept aside as savings every year against depreciation. So Messi Garu अभी अनअकैडमी में प्रिपेयर हो रहा है. So Messi Garu has taken laptop for preparation. Messi Garu को मालूम था 5 साल के बाद Messi Garu और नया लैपटॉप लेना पड़ेगा क्योंकि अनअकैडमी में हर एक दिन 1000 वॉच मिनट चलने के बाद लैपटॉप बर्बाद हो जाएगा. So that he thought 5 years are there. Before today he purchased the laptop for 50,000. 5 years के बाद he can get 20,000 only. Again he want to buy after 5 years. How much he has to add the money? He has to add 30,000 rupees. Yes or no? Again after 5 years he want to make a new laptop. He want to get a new laptop. 30,000 add होना चाहिए. एक साथ में 30,000 add होना मुश्किल हो जाएगा. That is why what he is doing. Every month 6,000 rupees he is keeping aside. 5 साल के बाद every month 6,000 सेव किया. 5 साल के बाद 30,000 savings are there. old laptop सेल किया 20,000 मिल गया. 20,000 plus 30,000 of savings पूरा बना के नया आएगा ना. इनको आएगा ना आएगा बताओ. So no need to worry. No need to worry. Saving हो गया, अच्छे से saving हो गया. Same like that. हम आज construction करा दिया हमारा घर. Now we are constructing our house by expecting 20 lakhs. We know that after 10-15 years we need to modernize it. So that house is not enough for us. We need to go for new house. So आज 20 lakhs को बना दिया घर. 10 lakhs में सेल करेगा after 10 years. 10 years के बाद 10 lakhs को सेल करेगा. So deficit क्या है? 10 lakhs ना. So every year you are going to save 1 lakh. Every year you are going to save 1 lakh. So that 10 साल के बाद आपका अकाउंट में 10 lakhs हो जाएगा. समझ आ रहा है? आज 20 लाख को घर बना दिया. आज 20 लाख को घर बना दिया. Every year you are saving 1 lakh. Every year you are saving 1 lakh. After 10 years you are selling out for 10 lakhs. This is your sale value. Sale value. And already your account में 10 साल के बाद 10 lakhs. So again 20 lakhs है नया घर बनने के लिए. Again नया घर बनने के लिए 20 lakhs है आपके पास. So that is what we are analyzing. That is why we are saying which is kept aside as a savings. Which is kept aside as savings. So we will say annual depreciation. Annual depreciation is equal to P minus SV by N. P minus SV by N. Annual depreciation is equal to P minus SV by N. P is principal value. P is principal value. SV scrap value. N number of years. P is principal value. SV scrap value. N number of years. What is SV? SV, the value of asset. The value of asset at the time of resale or end of utilization period. End of utilization period is salvage value, scrap value, resale value. समझ आ रहा है? What is salvage value? What is scrap value? What is resale value? Same. When you are selling off the product, selling off the asset at that time, whatever the value, that is called as scrap value, salvage value, resale value. So if somebody is asking you, what is the total depreciation? अरे रुको बेटा मिल जाएगा थोड़ा रुको. Total depreciation we can simply say principal minus salvage value. We can say this. Total depreciation is equal to principal minus salvage value हो जाएगा. हाँ लिखो. हो गया everyone done. So total depreciation मिल गया P minus SV total depreciation. और एक आएगा अभी बुक वैल्यू. हम बोलेगा बीबी. अरे बीबी रेडी सा नहीं बेटा. बुक वैल्यू. सो आप ये बोल रहे हैं, ये एग्जांपल ले लो. डिप्रिसिएशन क्या है इधर? हर एक साल का डिप्रिसिएशन क्या है ये एग्जांपल में? हर एक साल का डिप्रिसिएशन क्या है ये एग्जांपल में बताओ बेटा. 6,000. ओके. नाउ फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद यू वांट टू सोल्ड आउट योर लैपटॉप. हाउ मच यू कैन गेट? फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद यू वांट टू सोल्ड आउट योर लैपटॉप. 44K मिलेगा. सेकंड ईयर के बाद यू वांट टू सोल्ड आउट योर लैपटॉप. हाउ मच यू आर गेटिंग? 38K मिलेगा. थर्ड ईयर के बाद यू वांट टू सोल्ड आउट योर लैपटॉप. 32K. So every year end में you are checking what is the demand value in the market for your laptop. That is called book value. End of first year demand in the market book value 1 BV1. End of second year demand in the market BV2. End of third year demand in the market BV3. That is called book value. हाँ पहले I will tell you Messi uncle पहले समझ लो. I will give the definition after that you can write down. ये समझ आ गया what is book value? What is book value? Book value 1, book value 2, book value 3 समझ आ रहा है? हर एक आदमी को समझ आ रहा है बेटा? चलो now book value. The asset value. Yes. Correct. Devu Malia, correct. The asset value estimated at the end of every year after considering annual depreciation is called book value.
book value at a 0 year is principal P, BV0, BV0. Book value at a 0 year is principal P, BV0. Book value end of nth year, salvage value, scrap value, SV, BVM, SV, BVM. समझ आ रहा है बेटा? Book value at a 0 year is principal, book value at a nth year is salvage value. BV1 is equal to BV0 minus D1, P minus D1. That is only we have done ना. Principal is 50,000, D1 is 6,000, 50 minus 6,000, 44,000. ये खत्म हो गया. Completed this one, guys. Okay. Write down. चलो. Now you write down this. Example is साली को example. Principal is 50K, D is 6K. Now you continue writing it. Salvage value is the resale value at the end. So your structure design period is 20 years. 20 years के बाद structure for how much value you are going to selling off. और structure पूरा scrap करके scrap shop में बनने के बाद कितना मिल गया आपको? That is called salvage value. So today you made a house. एक घर को at least 50 साल लगेगा. And you felt that 25 years is, that is 50 years is you can use like anything. But you felt that 25 years is a good design period. In that good design period 25 years खत्म होने के बाद आप sell कर रहे घर. How much you can get after 25 years? That is called salvage value. हाँ, salvage value, resale value, scrap value. संजीव, आज आप एक बाइक ले लिया. ओके, एक बाइक ले लिया. रॉयल एनफील्ड बाइक ले लिया 2 लाख से. 20 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा. 20 इयर्स के बाद बाइक का मैक्सिमम पीरियड 5 6 इयर्स 10 इयर्स ओनली. बट यू यूज्ड इट फॉर 20 इयर्स. 20 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा? स्क्रैप को डालने के बाद आपको सिर्फ 20,000 मिल जाएगा. 20,000. The 20,000 is called salvage value. No difference, same. Straight line method, फर्स्ट वाला स्ट्राइट लाइन मेथड बोल रहे हैं हम. फर्स्ट वाला स्ट्राइट लाइन मेथड. अमाउंट टू बी सेव्ड or collected in n years. N years में how much you want to save or how much you want to collect, that is principal minus salvage value. Then annual depreciation, BM, principal minus salvage value by n. We can write like this, 1 by n into principal minus salvage value. And now depreciation factor मिलेगा. Every year how much cost is reducing? Depreciation factor 1 by n. Depreciation factor बोलेगा हम 1 by n. मिलेगा 1 by n depreciation factor. So now ये क्वेश्चन लिख दो. Principal is 60,000. Salvage value is 6,000. N is 6 years. Okay. End of life it is going to get 6,000 rupees salvage value. Principal 6,000. N is 6 years. Then amount to be collected. In 9 years. 9 years में how much amount to be collected? 9 years में हर एक ईयर को how much amount to be collected? So what is 1 by n? 1 by n is 1 by 6. DM 60,000 minus 6,000 by 6. 60,000 minus 6,000 by 6. 9,000. So 1 minute, it is amount to be collected in 6 years. 6 years. Amount to be collected in 6 years. So every year 9,000. Total depreciation. Every year 9,000 total depreciation. So amount to be collected 6 into 9,000, 54K. Or we can say 60,000 minus 6,000, 54K. समझ आ रहा है? स्ट्राइट लाइन मेथड में टोटल डिप्रिसिएशन आ रहा है आपको 6 into 9,000 आफ्टर फाइंडिंग डिप्रिसिएशन वैल्यू और एल्स प्रिंसिपल माइनस साल्वेज वैल्यू दोनों से. प्रिंसिपल माइनस साल्वेज वैल्यू 54,000 दोनों से. स्ट्राइट लाइन मेथड कंसीडर्स. स्ट्राइट लाइन मेथड देवू मालिया आपको लिखो नोट्स.
आपको लिखो बस, आपका जेड को मत लिखो। हाँ, आंसर इज 54,000 ओनली। मेसी स्ट्राइट लाइन मेथड कंसीडर्स फिक्स्ड एनुअल डिप्रिसिएशन। Fixed annual depreciation. What is meaning of it? Every year depreciation is same. Every year depreciation is constant. Same. हर एक साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा। हर एक साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा। BV1 P minus DM, BV2 P minus 2 DM, BV3 P minus 3 DM। ऐसा लिखने के बाद हो जाएगा BV1 P minus DM, BV2 P minus 2 DM, BV3 P minus 3 DM. Then what you can give formula for book value? Book value for n years is equal to P minus ND. Book value for n years is equal to P minus ND. Same previous example ले लो। Book value 1, principal 60,000, DM 6,000, 54,000 is BV1. BV2 54,000 minus 6,000 ऐसा ले लो, हो जाएगा BV1 minus 6,000, BV1 minus DM, और you take 60,000 minus 2 into 6,000, 48,000 ऐसा भी हो जाएगा। BV3 60,000 minus 3 into 6,000, 42,000। so ऐसा हो जाएगा बेटा। so you can write this formula also like BV1 minus DM, you can write this formula also like BV2 minus DM, हो जाएगा। BV1 is P minus DM, BV2 is BV1 minus DM, BV3 is BV2 minus DM। ऐसा भी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। both can give same answers, both can give same answers, हो जाएगा ना। किसी को डाउट है इनके बारे में? anyone having doubt? बताओ जल्दी। समझ आ रहा है स्ट्राइट लाइन मेथड क्या है? समझ आ रहा है बेटा? डन। चलो, ये स्ट्राइट लाइन मेथड है ना, स्ट्राइट लाइन मेथड द मोस्ट फेवरेट मेथड फॉर एसएससी जेईई एंड ईएससी एग्जाम। ईएससी में इतना बार आ गया, एसएससी जेईई में भी इतना बार आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेमस। अनंत दिस वन, तो ये फटाफट करेंगे, इतना आसान क्वेश्चन आएगा। देखो, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट 1100, साल्वेज वैल्यू 100, इक्विपमेंट लाइफ 5 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड 8%, ईयरली डिप्रिसिएशन बाय स्ट्राइट लाइन मेथड। ये देखो ट्विस्ट, देखो बेटा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सिंकिंग फंड दे रहे हैं। क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछ लिया बेटा? बताओ फाइनली क्या पूछ लिया? स्ट्राइट लाइन पूछ लिया। मींस दिस इज अननेसेसरी, जस्ट टू कंफ्यूज यू, सिंपल। स्ट्राइट लाइन मेथड से होना चाहिए एनुअल डिप्रिसिएशन। एनुअल डिप्रिसिएशन P minus SV by N, 1100 minus 100 by 5, आंसर इज 200। देखो इतना फुकेट में हो गया, सिंपल। बट ये देखने के बाद हम सिंकिंग फैक्टर करेगा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सिंकिंग फंड फैक्टर नहीं, बिकॉज़ दे डोंट वांट इट, दे वांट इट इन स्ट्राइट लाइन मेथड ओनली। A construction equipment initial cost of 2 lakhs, salvage value 50,000 with an economical life of 5 years. Rate of straight line depreciation and total depreciation. Rate of straight line depreciation क्या है? Rate of straight line depreciation 1 by n 1 by 5, 1 by n 1 by 5, 0.2। तो ये दोनों काट करो। Then total depreciation क्या है? Simple total depreciation 2 lakh minus 50,000 हो गया 1,50,000। कुछ चाहिए, कुछ गड़बड़ चाहिए इनमें? टोटल डिप्रिसिएशन कास्ट है, सो 0.2 और 1,50,000। आसान से आ रहे, 2 मार्क आसान से आ रहे। एसएससी जेईई प्रीलिम्स में ऐसा मॉडल भी आएगा बेटा, स्टार मार्क डाल के अच्छे से पढ़ लो फार्मूला। स्ट्राइट लाइन मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी जेईई प्रीलिम्स के लिए। देन एन इक्विपमेंट 25,000 rupees cost, purchased now, it will be used continuously for 8 years. Salvage value is 1,600, residual book value at the beginning of 6th year, used by straight line method of depreciation, beginning of 6th year। so पहले DM क्या है? DM 25,000 minus 1,600 by 8, annual depreciation बोलो बेटा, annual depreciation 2925। हम क्या देना पड़ेगा? what we need to find out as per question, क्या किसके लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा? it's a residual book value at the beginning of 6th year, book value of 5। अरे एंडिंग में बोलने के बाद BV6 ले लो, beginning of 6th year बोल दिया, समझ लो। beginning of 6th year means end of 5 years, so we can take BV5 not BV6। so we can take principal minus 5 DM, 25,000 minus 5 into 2925, हाँ 10375 rupees, 10375 rupees, ऑप्शन सी। so if you are taking BV6, ये भी चल रहा है 7450, गलत हो जाएगा, अंडरस्टैंड। BV6 में मत चलो बेटा, BV5 में चलना पड़ेगा, BV6 में मत चलो। हाँ, 6th ईयर शुरू करने के पहले बुक वैल्यू क्या है संजीव? 6th ईयर शुरू करने का पहले बुक वैल्यू क्या है? 6th ईयर शुरू करने का पहले बुक वैल्यू इज 5th ईयर बुक वैल्यू, इट शुड बी एंड ऑफ 5 इयर्स, बुक वैल्यू ऑफ 5 इयर्स, BV5 लेना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है बेटा संजीव? चलो हो गया काम। 6th ईयर शुरू करने का पहले बुक वैल्यू इज 5th बुक वैल्यू।
Original cost of an equipment 10,000. Salvage value is 1,000. What is useful life n? 5 years. Useful life n 5 years. Its book value at the end of 2 years of its useful life will be. Its book value at the end of 2 years of useful life will be same model. पहले DM estimate करो, DM गारू आएगा 10,000 minus 1,000 by 5 1800. BV2 चाहिए 10,000 minus 2 into 1800 6,400 आ रहा है ऑप्शन से। अभी समझ आ रहा है संजीव आपको? Are you getting now बेटा? The depreciation charges for a machine are 30 पैसा per working hour. हर एक घंटा काम करने के लिए 30 पैसा are depreciation cost. Machine has a scrap value SV 2000. Working hour average life of 24 hours. Working hour average life of 24,000 hours. What is purchase price of the machine? P चाहिए. What is P they are asking? So we can write this. Generally we write a salvage value principal minus n into dm. This we can write now. Salvage value. If you take dm, P minus SV by n. Now from this P लिखो principal SV plus n into dm. ऐसा ले लेंगे. Principal is equal to SV plus n into dm. Salvage value 2,000 rupees. N 30 paisa per hour. How many hours? 24,000 hours. 30 paisa per hour. हर एक घंटा को 24,000. So 30 paisa per hour. Total hours 24,000. चलो ये समझ आ रहा है बेटा? कहां से आ गया ये समझ आ रहा है अनंत? संजीव जी क्लियर टू एवरीवन? The equipment of 25 lakhs with an estimated salvage value of 5 lakhs. Equipment cost 25 lakhs. Salvage value of 5 lakhs after 5 years of useful life. What is the approximated equated annual cost of equipment? इतना आसान आ रहा है देखो 25 minus 5 by 4 unit equipment cost 25 lakhs useful life of 5 years no salvage value average annual cost of equipment अरे जस्ट फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो मिस्री डोंट थिंक लाइक एप्टीट्यूड क्वेश्चन जिंदगी बर्बाद हो जाएगा फार्मूला में जस्ट सब्स्टिट्यूट करो मिल जाएगा आंसर इफ यू फील लाइक एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाएगा क्लियर एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस एनीवन हैविंग this method only important actually ESC and SSC में this method only important चलो we'll go with the SOI digit method SOI क्या है sum of years method so they consider according to this annual depreciation varies with age annual depreciation varies with age से ओके शिंदे गारू बाय एज से कंसीडर करने के बाद डिप्रेशन फैक्टर चेंज हो रहा है डिप्रेशन फैक्टर इज गोइंग टू चेंज डिप्रेशन इज मोर इनिशियल ईयर्स एज इंक्रीज होने के कारण से डिप्रेशन कम हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं इट गो ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज ऑफ एज डिप्रेशन D1 greater than D2 greater than D3 greater than D5 ऐसा दिएगा depreciation changes with age what is the total depreciation हम कभी भी ऐसा ले लेंगे ना total depreciation क्या हो जाएगा total depreciation after n years principal minus salvage value now we are talking depreciation after m years means after 1 year after 2 year after 3 years ऐसा बोलने के बाद dm depreciation after that m years n minus m -1 upon sum of years into p minus sv n minus m -1 upon sum of years into p minus sv so n is end life useful life end life or useful life m is a specific time
specific time at which we are finding depreciation. So maybe your useful life is 30 years. You are analyzing at the 10th year. N is 30, M is 10. Useful life is 100 years. You are analyzing at 20th year. N is 100, M is 20. Example, N is taken as 5 years. Now, sum of years क्या हो जाएगा? SO by sum of years 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 13 क्या है मेसी अंकुल? 4 ही होना चाहिए आपको. 15. Sum of years will be taken 15. समझ आ रहा है? Sum of years will be taken as 15. So for example, ऐसा बोल रहा है D1 चाहिए आपको D1. N is not changing. Minus M is 1. Minus 1 by sum of years into P minus SV. We can say N upon SOY into P minus SV. D2 चाहिए आपको D2. N minus 2 minus 1 because M is 2 ना. D2 बोल रहा है. M is 2, 2 minus 1. SOY P minus SV. What you can take? N minus 1 upon SOY P minus SV. D3 क्या है? N minus 3 minus 1 upon SOY P minus SV. We can take N minus 2 upon SOY P minus SV. समझ आ रहा है बेटा? Is that clear how to find out D1, D2, D3? अरे कभी भी प्रीवियस स्लाइड में रुक जाएगा आप. Whenever I shout on Messi, सस्टिगार इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है सस्टिगार whenever I shout on Messi. ओके रेवंत बाय बाय. हमेशा हमेशा सस्टिगार खुश रहेगा मेसी गार को दांड मिलने के बाद. यस बोल रहे देखो बेटा, देबू यस बोल रहे देखो. चलो completed this guys. Shall we move? Month will be dead now. So we'll take one example. Principal is 50,000. Salvage value is 10,000. N is 5 years. Okay. Principal 50,000. Salvage value 10,000. N is 5 years. Now, what is the total depreciation? P minus SV. 50K minus 10K. 40,000. Total depreciation. If I am going to find out D1 is equal to SOY क्या है इधर? SOY 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 15. So D1 N upon SOY into 40,000. D2 N minus 1 upon SOY into 40,000. D3 N minus 2 upon SOY into 40,000. D4 N minus 3 upon SOY into 40,000. D5 N minus 4 upon 15 into 40,000. First one 13,333. 13,333.33. $10,666. समझ आ रहा है बेटा? सम ऑफ ईयर मेथड समझ आ रहा है? सम ऑफ ईयर मेथड. एंड सेम बुक वैल्यू करा दो इनको. बुक वैल्यू BV1 P minus D1 ना. BV1 P minus D1 50,000 ना. 50,000 1 minute. 50,000 minus 13,333.33. BV2 को क्या लिखेंगे? P minus 2D1 लिखेंगे इनके बारे में. BV2 P minus 2D1. BV2 P minus 2D1. थप्पड़ मिल जाएगा बेटा, थप्पड़ मिल जाएगा. ये गलत है, ये गलत है, ये मत ले लो. BV2 नो. BV1 minus D2. अनंत, not P minus D2 ना. BV1 minus D2. This is correct. BV2 BV1 minus D2. 36,666.66 minus 10,666.66. 26,000. BV3 BV2 minus D3. 26,000 minus 8,000. 18,000. BV4 BV3 minus D4.
BV4, BV3 minus D4, BV5, BV5 minus BV4 minus D5. क्या आ गया फाइनली? आ गया साल्वेज वैल्यू, रीसेल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू आ गया 10,000. वो भी होना चाहिए हमको. रीसेल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू वो भी होना चाहिए. दैट इज सेट टू बी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years. हाँ पक्का ऐसा ध्यान से करना पड़ेगा अनंत गारू. श्योर इट शुड बी डन. चलो नेक्स्ट थर्ड वन आ रहा है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. थर्ड मेथड आ रहा है. फर्स्ट वन स्ट्राइट लाइन मेथड, सेकंड वन एसवाई मेथड. अरे हर एक दिन सेम टाइम में चल रहा है. कहाँ चल रहा है बेटा देबू? चलो कोई अपॉइंटमेंट है क्या? कोई अपॉइंटमेंट होगा तो चलो. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. भूख लग मिल जाएगा जोर से, फटाफट मिल जाएगा. काली और फादर, काली और फादर विल टॉक. आपको मिल जाएगा. हाफ एन आवर क्लास अटेंड करो, देन यू गो फॉर लंच. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. सो डिक्लाइनिंग बैलेंस में क्या हो रहा है? एनुअल डिप्रिसिएशन, annual depreciation calculated as a annual depreciation calculated as a fixed percentage of book value. Annual depreciation calculated as a fixed percentage of book value means dm is equal to some fixed percentage of book value. So fixed percentage of book value बोल रहे हैं. So that fixed percentage of book value क्या हो रहा है इधर? चलो. So we can consider dm is equal to some fixed percentage into bb m minus 1. dm is equal to d is that percentage. समझ लो d क्या है? Fixed percentage of book value बोल दिया ना. Fixed percentage of book value. That fixed percentage is called d bb m minus 1. bb m minus 1 क्या है? Why you are taking bb m minus 1? bb m minus 1 is bb minus dm. bb m minus 1 is bb minus dm. So if you are talking, सुनो बेटा, if you are talking very simple, I will tell you. d1 is equal to p into d. d1 is equal to p into d. d कहाँ से आएगा? d is equal to 1 minus